Hey everyone, this is video number 6 in the series of ratio and proportion. Video number 1 to video number 5, we try to develop our understanding, shortcuts and techniques to solve and address algebra word problems. This video onwards, we would be solving algebra word problems only. So पिछले वीडियो से आपने एक चीज तो समझी होगी कि अगर आपको a to b to c 1/2, 1/3, 1/4 दिया हुआ है, so this does not mean that a to b to c is 2 to 3 to 4 that you learned in the previous video. Rather a to b to c will come out as 6 to 4 to 3. In this video I would like you to understand, if there is a total amount, then a is going to get 6/13 of the total, b is going to get 4/13 of the total, and c will get 3/13 of the total, and how problems are going to look like. So सबसे पहले सबसे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. यहां पे देख के रखा हुआ है कि अमित हैज 1000 रुपीज. ठीक है जी. He distributes this amount among his wife, son and daughter in this ratio 7:2:1. आपसे पूछा जा रहा है कि डॉटर के पास में कितना पैसा आएगा, आप वो बता दो. नाउ अंडरस्टैंड दिस. वाइफ एंड सन एंड डॉटर, they are getting the amount from Amit in this ratio. Is that okay? In video number 4 we talked about this method. So I might have told you the concept of multiplying factor, and if that should be taken into consideration, wife is going to get 7x rupees, and then son is gonna get 2x rupees, and daughter will be getting x rupees. That is what it is saying. Now, and what is x here? X is a multiplying factor, and we need to find out the value of x. And if I add these values, the amount with wife and then son and the daughter, this will come out as 10x, 7x plus 2x plus x. Now this value is given to you as 1000, isn't it? This is given to you as 1000. So what is going to be the value of x? This is what I was telling you, that you have to find out the value of x. So this one comes out as x here, and if this one comes out as x, can you find out what is going to be the amount with daughter? As of now, daughter has got x. So what does that mean? Daughter is going to get 100 rupees, son is going to get 200 rupees, and wife is going to get 700 rupees. आपको लग रहा होगा कि भाई आप लिख क्यों रहे हो, इतनी सिंपल सी बात है, ये तो आप मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहे होगे, isn't it? But then this is for those जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी नहीं थी. But then what is another method? What is the second method? मैं तो इतना सारा लिखना पसंद नहीं करूंगा. So my second method is going to be something like this. Understand this. If wife, son and daughter are getting amount in 7:2:1, then I would say that wife gets 7 divided by 7 plus 2 plus 1, which is 7 divided by 7/10th of total, isn't it? So how are we getting 7/10? So 7, the value of the number that wife is getting out of total is 7 plus 2 plus 1. So similarly, how much son is going to get? Son is going to get, now you understand, 2/10 of the total, and daughter would get which is 1/10th of the total. And what is the value of 1/10th of the total? That value is nothing but 1000 divided by 10. This value comes out as 100. You don't even have to pick up your pen, your answer is done. So ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, ये वाला मेथड है जो बेटर है, आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो इस वाली स्लाइड से आप तो सिर्फ इतना समझिए कि आपने ये 7/10, 2/10 और ये 1/10 लिखना यहाँ पे कैसे सीखा. दैट इज व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम. Now Amit is getting Amit is having 1300 rupees, and he is distributing this amount again in wife, son and daughter in the ratio of 1/2, 1/3, 1/4. Now I might have told you that this value or this ratio here
1/2, 1/3, 1/4. This cannot be said as 2:3:4, isn't it? This cannot be said as. And what was the technique that we learned in video number 5? That we should be taking the LCM of denominators. So you take LCM of 2 and then 3 and then 4. This LCM comes out as 12. And if this ratio comes out, this value comes out as 12, all the constituents must be multiplied by this value. So this is 1/3. So this comes out as 6:4:3. So this ratio is not 2:3:4, rather the ratio is 6:4:3. Now how much daughter is going to get? Because this is wife is to son is to daughter. So daughter obviously is going to get, you tell me how much, you tell me how much. So this daughter is gonna get 3/13 of total. How am I getting 3/13? Probably you're understanding this now. This is 3, this is 3, 3 divided by 6 plus 4 plus 3. Say 3/13 of the total. How much is the total amount? This is 1300. So this is gonna be 100. How much daughter is getting? 300 rupees. Simplified हो गया. अगर आपको ये समझ में आया तो अगली वाली प्रॉब्लम पे जाते हैं. Read the problem. थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम को चेंज करते जाएंगे with the same set of values for you to develop your understanding. Now this one says that Amit has 1300 rupees again, and he is distributing this amount among his wife and the son and the daughter in the ratio of 1/2, 1/3. So wife and then son and then daughter are getting money in this ratio that you understood from the previous slide. Find the difference between wives. So how much wife is gonna get? See, wife will get 6/13 of total. Total is this. How much daughter is going to get? Daughter is going to get 3/13 of this value. So now you may simplify, which is coming out as 600. This value comes out as 300, and the difference is going to be nothing but 300. I hope you're getting the problem. I hope you're getting the problem. या तो आपसे पूछेगा कि how much son is getting or daughter is getting or wife is getting, or they might also ask you what is the find the difference between or find the sum of, those kind of problems that they might ask you. अब ये इंग्लिश वाली अंडरस्टैंडिंग है हमारे को, कॉम्प्रीहेंशन. प्रॉब्लम तो आपका यहीं तक है, इसके बाद जो सब कुछ लिखा हुआ है वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन को चेक करने के लिए लिखा हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू बी 300. नाउ read this problem and try to solve this question on your own, because now I haven't because you know everything that you should be having to solve the problem. A man distributes rupees this much among his daughter, wife and son in the ratio of such that half of daughters, so daughter का half यही हुआ ना, half of daughter and wife का कितना, wife का 1/4 and then son का 1/5. They are equal. That is what this problem is saying. Please ensure that you have understood this. You may pause the video. You try to solve this question on your own. Try to understand step by step as to what I am writing, why am I writing. अब ये मैंने तो लिख दिया यहाँ पे. अब मेरे को निकालना क्या है कि मेरे को डॉटर, वाइफ और सन का अगर रेशियो पता चल जाए तो उसके बाद की सारी कहानी मैं कर सकता हूँ. अब वो रेशियो निकालने के लिए आप करोगे क्या? देखो, अगर आपने इन दोनों से आप डॉटर और वाइफ का रेशियो निकाल सकते हो. हाउ कैन आई डू दैट? सो कैन आई राइट दिस वैल्यू डॉटर, and if wife, not wife, the amount with wife, if it comes on the other side of equality, it is going to go in the denominator, and when 2 goes over here it will be in the numerator. So 2/4. So this you can write as daughter to wife is 2:4, or you may write as 1:2. Is that okay? Very simple. So the amount with daughter and wife are in the ratio of 1:2. Similarly, from these two we can find out what is going to be the ratio of amount with wife and son. How do we do that? Wife over son. This value goes as 4/5. So wife and son are having the amounts in the ratio 4:5. अभी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? Daughter and wife, they are having in 1:2 ratio.
wife and son are having in the ratio 4:5. Now you must have learned this in video number 2 or video number 3, in fact video number 3, as to how to find out the ratio of daughter, wife and son in one line. So this is going to be 4, and then this is going to be 8, and then this is going to be 10. If you simplify, this will come out as 2:4:5. Did you get that? Did you get that? 4, 8 and then 10, 2, 4, 5. Find the daughter's share. Now if you have to find out how much is the share of daughter, what is that you should be doing? What is that you should be doing? So daughter is going to get what? Daughter will get, not doctor, daughter will get 2 plus 4 plus 5, which is going to be nothing but 2 by 11th of the total, isn't it? और हमसे बाकी का तो किसी का पूछ नहीं रहा, सिर्फ डॉटर का पूछ रहा है. और टोटल अमाउंट हमारे पास में है क्या? 165,000. Now let us try to divide this. So 1 and then 5. So this is 15,000. 15,000 into 2. The value with daughter is coming out as 30,000. 2-3 things that you're learning from this very important question. Number 1, अगर आपके पास में कुछ दिया हुआ है ऐसा कि this equals to this, आप प्रॉब्लम सिंप्लीफाई भी मत करो. आप तो सीधे सीधे यहाँ पे ये लिख सकते थे ना बाबा, आप तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते थे कि डॉटर, वाइफ एंड सन, they are making they are getting the amount in the ratio of 2:4:5. Are you getting this? So that's understanding number 1. अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप इतना सारा जो आपने लिखा है वो सारा का सारा आप डिस्कार्ड कर जाओगे. तो क्या सीखा आपने? मेरे को वापस लिखने दो, क्योंकि मेरे को पता है कि ये गड़बड़ होती है. So I say that something like this: a/3 is equal to b/4 is equal to c/5. And if I will have to write what is going to be the ratio of a is to b is to c, I would say that this is 3:4:5. मेरा काम बन गया, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना. हाँ, बट आपको कैसे ये समझ में आएगा? आपने सीखा इन दोनों से a is to b निकाल दो, इन दोनों से b is to c निकाल दो. Now you have a is to b and then b is to c. Can you find out a is to b is to c? Yes, you can do that. आप निकालोगे, आपको यही वाला आंसर निकल के आएगा. That is understanding number 1. What is your understanding number 2 here? Your understanding number 2 is how to write, मान जाओ भाई, how to write, if you have got 2:4:5, the value with daughter is going to be 2/11th of total. Understanding number 2, right? So this is what you are learning. अब आप स्टेप बाय स्टेप करके देख लो. कुछ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप शॉर्टकट सीखेगा कैसे जब तक आप लॉन्ग कट नहीं आता आपको, है ना? तो चलो भाई, दिस इज व्हाट आई हैड. Solve this question, pause the video, try to solve this question on your own. A sum of ₹6,400 is divided among 3 workers. अब इन 3 वर्कर्स में किस रेशियो में बांट दिया? 3/5, 2 and 5/3. So whenever you pick up your pen, no, उसके पहले आपके दिमाग में ना स्टेप्स जनरेट होने चाहिए कि आपको करना क्या है प्रॉब्लम के लिए. स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड में गड़बड़ कहाँ करते हैं? उनको पता है नहीं करना क्या है. व्हाट इज गोइंग टू बी देयर थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप. उसके पहले वो पेन उठा के कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं. नहीं, पहले आप प्रॉब्लम को पढ़ो. अब दिस इज द अमाउंट एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो, दिस इज टू दिस टू दिस. तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस करी हुई ही है तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको इसको न्यूमेरिक वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करना है. और न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या सीखा हुआ है कि आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो. एलसीएम आप किसका लोगे? आप लोगे एलसीएम 5 का, 2/1 लिख लो, 1 का एंड 3 का, and इसको this value is coming out as 15. So what does that mean? What is the second step? You will be multiplying 3/5 with 15 and then this 2 with 15 and then 5/3 with 15. So why are we doing it? Because denominator must get cancelled by doing so. So the ratio comes out as 9, 30 and then 25. हो गया ना, सिंपल. अब आपसे क्या पूछा जाता है? शेयर ऑफ द सेकंड वर्कर. अब सेकंड वर्कर तो हमारे यहाँ पे 30 है. 30 डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस वैल्यू? 30 प्लस 25, 55, 55 प्लस 9, 64. दिस ऑफ व्हाट? दिस ऑफ टोटल. एंड व्हाट इज द टोटल वैल्यू? विच इज 6400. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 100. द वैल्यू कम्स आउट एज 30 into
300 which is, now you know what is the answer? Is that okay? 3000. ये वो प्रॉब्लम्स है ना जो आपको बैंक पीओ में मिलेगा, एसएससी में मिलेगा, कैट वाले के लिए रुकना है हमारे को। बट हाँ, इन एग्जामिनेशंस में तो यही इसी के टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और अगर आपसे बन रहे हैं तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। नाउ रीड द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ, किसी को डिवाइड करना था 1/2, 1/3 एंड 1/4 में, है ना। प्रॉब्लम ने कहा कि भाई उसने तो गड़बड़ कर दिया और उसने डिवाइड कर दिया 2:3:4 में। अब 2:3:4 में तो कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगा, और अगर 2:3:4 में कर दिया तो हाउ मच A विल गेट एंड हाउ मच B विल गेट एंड हाउ मच C विल गेट। सो A is going to get 2 divided by total, which is what? 2/9 of the total. This is 3/9 of the total, and this is 4/9 of the total. 2/9 of what value? 2/9 of 117. 3/9 of 117 and 4/9 of 117. ये मिलना नहीं चाहिए, बट उस बेचारे को ये लगा कि 1/2, 1/3, 1/4 इज इक्वल टू 2:3:4, तो उसने यहाँ पे ये वाली गलती कर दी। और अगर ये गलती कर दी तो उसको मिलेगा कितना? दिस इज 13 into 2 26, and then 13 into 3 39, and then 13 into, so A will get 26 rupees, would have got, in fact not would get, would have got, अगर ये गलती होने की वजह से ये हुआ, दे दिया इसने, है ना। बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। अच्छा, ये दे दिया उसने 26, 39 एंड 52, और उसको देना किस रेशियो में चाहिए था? उसको देना चाहिए था 1/2, 1/3, 1/4। अच्छा, अगर वो 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेशियो में देता तो ABC को मिलता कितना? पहले तो ये निकाल देते हैं, है ना। So had it been 1/2, 1/3, 1/4, now you're understanding this. You can write this value as, because you will have to take the LCM of denominators, and the values in denominators are 2, 3, 4. If you take LCM, it is coming out as 12. Multiply all these by 12, you will be having 6 and then 4 and then 3. So A must have got 6/13, B must have got this, and C must have got this. Of what? Of total value. And what is the total value here? 117, 117 and 117. So this is 9. So A gets 54 rupees, and this is 36 rupees, and this is 27 rupees. Understand this. किस रेशियो में बांटना चाहिए था? The money should have been distributed in this ratio, and hence A would have got 54 correctly, B would have got 36, C would have got 27. बट ऐसा करने की बजाय उसने क्या कर दिया? A को दे दिया 26। A को घाटा हो गया, A को तो गेन हुआ ही नहीं, तो A को तो गेन नहीं हुआ। B must have got 36 but B got 39, so B को ज़्यादा मिल गया। C must have got 27 but C को सबसे ज़्यादा दे दिया, which is 52. so इस सिचुएशन पे गेन किसको किसको हुआ? B को हुआ, C को हुआ, और A और B को कलेक्टिव जो गेन हुआ वो टोटल क्या रहा होगा? जो A को टोटल लॉस हो गया। दैट इज व्हाट इट इज। सो इन दोनों को तो गेन हुआ, A को हो गया लॉस। नाउ दिस प्रॉब्लम, दिस वन इज रियली गुड। 2010 divided among A, B, C in such a way that A gets rupees if, read the problem. Now अभी अंडरस्टैंडिंग ना धीरे 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 अब आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपके कॉम्प्रिहेंशन की भी अंडरस्टैंडिंग है। And what is this line? If A gets this, then B must get this. So what does that mean? A and B, their amounts are in the ratio of 5 and 12, isn't it? And if B gets 4, C must get 5.5. So this is to 5.5. कई सारे लोग ना यहीं पे आके ऑफ हो जाएंगे, अब इस डेसिमल का क्या करें? Now you must have learned in video number 3. What did I tell you? that आप इन दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
और अगर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय रेशियो हियर, लेट इट बी 5 and 12, and if I multiply 4 with 2, it is coming out as 8. 4 into 2 8, and 5.5 into 2, this value comes out as 11. Now you have got the integers, and if you need to find out as to how we should be finding A's to B's to C in one line, अब वो method आपको पता है, this is 40 and then this is 96 and then 12 into 11, this is 132. Please try to understand this one. If you're not video number 4, please go and watch it. 4 सब में common है, so this is going to be 10 and then this is going to be 24 and this is going to be 33. So what is the ratio of A, B, C? It is coming out as 10, 24 and 33. And now what is the problem? देखो हर बार हो क्या रहा है, आप कहीं से कुछ भी घुमा फिरा के A to B to C निकालना है, A to B to C to D निकालना है, उसके बाद क्या करना है, वो फ्रैक्शंस लिखने हैं, उसके बाद प्रॉब्लम देखो जो कह रहा है वो कर दो, आपका काम खत्म है. So what is going to be the, हाँ ये अच्छा प्रॉब्लम हुआ, the share of C will exceed that of B. Understand? कई लोग B और C का अलग अलग शेयर निकालने लगेंगे. क्यों निकालना भाई B और C का अलग अलग? भाई देखो B any which way is going to get what? 24th of the total. And what is this total amount? So this is coming out as 67. 24 of the, and C will get what? 33 of the total, which is this plus this plus this, again is this. तो B को मिलेगा इतना, C को मिलेगा इतना, और वो पूछ रहा है C का B से कितना ज़्यादा, C का B से कितना ज़्यादा. इट्स वेरी सिंपल, 33 upon 67 of total minus 24 upon 67 of total. If you simplify this thing, it is 33 minus 24, and 33 minus 24 is 9 by 67. अब आप करो कैलकुलेशन, पहली कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? So 9 by 67 of what? 9 by 67 of the total, and the total value is given to you as 2010. 2010 is, this is 1, this is 3, 30. The difference comes out as 270. अगर आप पहले C का निकालोगे, फिर B का निकालोगे, फिर डिफरेंस करोगे, इस वाले मेथड से आप 30 से 40 सेकंड बचाने की कोशिश कर सकते हो अपने. मैंने क्या बोला आपको? B any which way is going to be getting, C is going to be getting this much of the total, B is going to get this much of the total. डिफरेंस निकालना है, आपने निकाल दिया, आपका काम बन गया. So people, this is what I had. हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है. ये तो देख के ना कई बार CSAT वगैरह में मैंने क्वेश्चन आते हुए देखा है, बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी. SSC CGL में देखा हुआ ये आते हुए. तो एक बार तो कैट में भी यूज हो गया था ये, बड़ा सिंपल सा. नाउ it says that a sum of rupees 1300 is divided among P, Q, R such that P by Q का जो शेयर है वही Q by R का है और वही R by S का है, और ये तीन के तीनों किसके बराबर है प्रॉब्लम के हिसाब से? 2/3. अब आपसे पूछ रहा है कि भैया P को कितना देंगे बताओ. एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लिखना, दूसरा आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये P by Q है क्या? P is to Q, और ये Q is to Q by R है क्या? ये है, और ये R by S है क्या? ये है. And this value is given to you as 2:3. This value is given to you as 2:3. This value is given to you as 2:3. Would you be able to find out P, Q, R, S in one line? Yes. You learned this video number 3 में. अब what is going to be this value? P is to Q is to R is to S. This comes out as now 8. And then this is what? 2 into 2 into 2, 8. Then 3 into 2 into 2, which is 12. And then 3 into 3, and this is 18. And then 27. अरे हो गया ना काम खत्म एक लाइन में. अब वो एक लाइन क्या है, आपको वीडियो नंबर 3 सीखनी है. अब यहाँ तो मैं उसको सिखाऊंगा नहीं क्योंकि आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो 8, 12, 18 एंड 27 के रेशियो पे हो गया. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप P का शेयर बता दो भाई. How much P got here? तो P का निकालने के लिए अब आपको पता है, P का निकालने के लिए 8 divided by total. What is total? This is 20 and 20 plus 45. This is 8 plus, this is 65. 8 upon 65 of the total. And how much is the total here? What is the total? The total value is given to you as 1300. So 1300 यहाँ पे multiply कर दो. So this value is 1, this value is 20. 8 into 20 comes out as 160. मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारे को बेसिक्स पता है
और कई सारे लोग पता है बेसिक्स क्यों नहीं सीखना चाहते, उनको लगता है यार ये तो हमारे को बाय डिफॉल्ट पता होगा ही होगा, बिकॉज वी हैव लर्नड दिस इन 5th एंड 6th एंड 7th स्टैंडर्ड, मे बी नहीं पता यार, भूल गया आप, कुछ हो गया आपको, वो जब तक बेसिक्स आपको आएंगे नहीं प्रॉब्लम आपसे बनेगा नहीं। सो प्लीज गो वॉच वीडियो नंबर 2 टू वीडियो नंबर 5, ये सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना, ये हमने वहीं पर डेवलप करके रखी हुई है। So this is what I had in this video. This you can solve on your own. I will drop this question in the comment section. Description पे आप देख लीजिए, इसको solve कर लीजिए, and the answer here is either this or this. Do let me know. Do let me know which one is the answer. But this one is a good problem to solve. So in the next video, I am going to be talking about आप जो salary की problems होती हैं कि किसी को इतना मिल गया, उसने इतना खर्च कर दिया, उसने इतना बचा लिया, उसने इतना सेविंग कर दिया, दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड एट द सेम टाइम कॉइन वाले प्रॉब्लम पे ना पूरी दुनिया परेशान होती है। आई कैन अश्योर यू ऑन दिस, बिकॉज सिर्फ रेशियो का अंडरस्टैंडिंग से तो यहाँ पे काम नहीं चल सकता। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग इन वीडियो नंबर 7 ऑफ द सीरीज, एंड दे एक्चुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आते हुए देखे गए हैं ईयर ऑन ईयर। So you must be able to develop those understandings, right? So I'm gonna see you in video number 7. Till then, bye bye and take care. And thank you very much for watching this one. And if you have not seen video number 2 to 5, please go and watch them, because इसके आगे ना आप 7, 8, 9, 10 कितने भी वीडियोस देख लोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपने वो देख के रखा है तो आपका इंटरेस्ट यहाँ बना रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बनी रहेगी, राइट? सो आई एम गोना सी यू देयर। बाय बाय एंड टेक केयर।